A sample of a mixture of calcium chloride and sodium chloride weighing 4.22 gram. It was treated to precipitate all the calcium as calcium carbonate. This calcium carbonate is then heated and quantitatively converted into 0.95 gram of calcium oxide. So calculate the percentage of calcium chloride in the mixture. So in short, we have to calculate first the mass of calcium chloride in the mixture. Total mass is given. Total mass of mixture. What is total mass of mixture? 4.22 gram. And to calculate percentage of calcium chloride, mass of calcium chloride divided by mass of mixture into 100. So mass of mixture is already given to us, so there is no need to worry about that. 4.22 just we have to put. हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. अब कैल्शियम क्लोराइड जो है ना, उसने क्या बोला है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है, फर्स्ट इट वाज प्रेसिपिटेटेड टू कैल्शियम कार्बोनेट. जितना भी कैल्शियम है वो सारा ही कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया है. ठीक है. उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको किया हमने हीट. तो व्हेन वी हीट इट, यू नो व्हाट वी गेट? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. So if we have 1 mole of calcium chloride, we get 1 mole of calcium carbonate, because in calcium chloride there is 1 mole of calcium. In calcium carbonate again we have 1 mole of calcium, and when we heat it even, then we get 1 mole of calcium chloride oxide. So that means mole of calcium oxide, if we get moles of calcium carbonate and we get moles of calcium chloride, because the number of moles of calcium chloride is equal to number of moles of calcium carbonate, which in turn equal to number of moles of calcium oxide. And you know, number of moles of calcium oxide we can calculate. We have mass 0.956 divided by 0.959 divided by 56. So mass of calcium chloride divided by molar mass of calcium chloride, that is equal to 0.959 divided by 56. So what is mass of calcium chloride? 0.959. Mass of calcium chloride divided by molar mass of calcium chloride. So what is molar mass of calcium chloride? 1.9 gram. So percentage of calcium chloride is equal to 1.9 divided by 4.22 into 100. 40. Okay. Approximately. So this is the way to approach the question and solve it. Just आइडेंटिफाई कि क्या फाइंड आउट करना है. तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड वी हैव टू फाइंड आउट, एंड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हमने क्या किया, इसको 0.959 कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स लिए
जितने इसके मोल्स थे उतने कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट के मोल्स थे और उतने ही कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स होंगे। उससे हमने उसको कनेक्ट कर दिया।